Please tell your friends to join on YouTube instead of that link. Of course, he's dropping a message like that. But we are starting on the YouTube channel. Anyway, लाइक करो, अपना लाइव बनाओ. एक मिनट, we are discussing a good, important, good, solid chapter. You have to be focused. There is no option. Look at me. Last time we said, if 0 is given, we make the special case for 0 than other digits. And we also said, first place is considered separately and distinctly from the remaining places. And then we solve the problem based on that. Now, I think we completed how many? 8 questions. तो 90 के लिए पहले तरफ देखो. माइन क्वेश्चन के लिए अब मेरे तरफ देखो. असू दे, थांब जरा. In how many ways can नका बोलवा था बस. Stop. We are on YouTube. Is open for anyone, and let's not gather a bad impression about the class. Look at me. In how many ways can 4 boys हे दिव्य मेला रेकॉर्डिंग करायला लागतं का? पुढे गेला होईल ना आपोआप. In how many ways can 4 boys and 2 girls and a teacher be arranged in a row for a photograph? My question to you is, tell me, in all how many people are there? In all there are 7 people, and because there are 7 people, there have to be how many chairs? There have to be how many chairs? There have to be how many chairs? Correct? In all how many people are there? 7. So without any condition, 7 people can take 7 chairs in. So total number of arrangements, that total number of arrangements is 7p7, which is 7 factorial, which is 5040. यहाँ तक समझा? अभी कंडीशन अप्लाई, एक कंडीशन. अभी एक बात ये परम्यूटेशन के प्रॉब्लम में ध्यान में रखो, जिस पे कंडीशन है उसको फिक्स करो, बाकी सब कैन इंटरचेंज. तो व्हाट हैपेंस इज दैट 1 2 3 4 5 6 एंड व्हाट 7 कंडीशन इज ऑन whom? टीचर. एट विच प्लेस? सेंटर. बाकी सब जो 6 लोग हैं वो इंटरचेंज कर सकते हैं. तो 1 टीचर 1 प्लेस 1 p1, 6 other 6 places 6p6. That is why this is 6 factorial 720. जिस पे कंडीशन है उसे मार्क करो, बाकी सब इंटरचेंज करते हैं. गर्ल्स आर एट कॉर्नर प्लेसेस. नाउ कॉर्नर इज फर्स्ट एंड लास्ट. 1 2 3 4 5 6 7. So the 2 girls are at the 2 corner places, but they can interchange. जब इंटरचेंज कर सकते हैं, तो फिर क्या होगा कि these 2 girls and 2 places will be 2p2 and remaining 5 others will be 5p5. So this is 2 factorial and this 5 factorial will be 2 into 120, that's 240. Yes, समझा? At the teacher is at the center
and does not want the problems on either side of him. हात लागला हातच लागला काय उपयोग तो 1 2 3 4 5 6 एंड व्हाट 7. अभी तो मेरे तरफ देखो, कंडीशन किस पे है? टीचर. Teacher is at the center, therefore we mark the teacher at the center. Does not want the girls on either side of him. Now what happens is that there are two girls, right? There are two girls, right? Now these two girls, condition is on boys or girls? Girls. That these two girls, बघा मी एका गर्ल मधून दुसरी गर्ल तयार केली. Now, if the teacher is sitting at the center, again the girls cannot go and sit there only in the chair of that teacher. बरोबर. Similarly, the girls cannot sit besides the teacher on this side or besides the teacher on this side. And therefore, what happens is that for those girls, only these two and these two, these 4 chairs will be available. They cannot be besides the teacher, adjacent to the teacher. And therefore these will be 4 chairs available to the 2 girls. These will be available to the 2 girls. And therefore one teacher, one place, one P1. 2 girls, 4 chairs, don't write 2P4, write 4P2. At one teacher is sitting, 2 girls sit, remain 4 boys. 4 boys को 4 chairs मिलना ही चाहिए ना. 2 girls can take only 2 out of those 4 chairs. 2 girls cannot take all 4 chairs. So what happens is that 2 girls will take 2 chairs. One teacher has already taken 1 chair. So the 4 boys remaining, bichare poor, they have no condition. And they can take the 4 chairs in any way they want. And therefore 4 poor boys and the 4 chairs will be 4P4. ये समझा? एक बात समझने की कोशिश करो एज अ प्रिंसिपल, जिस पे कंडीशन है उसे मार्क करो, बाकी सब अदर्स आर रेडी टू इंटरचेंज. समझा? एंड देयरफॉर ये थी कंडीशन ऑन गर्ल्स एंड देन दीज वेर द बॉयज एंड ऑफकोर्स दिस इज अ टीचर. आता असं म्हणू नका काय की 4 आर द बॉयज, 2 आर द गर्ल्स अँड 1 इज अ टीचर, म्हणजे हा बॉयज आणि गर्ल्सपेक्षा वेगळा आहे का? असं नाही, बरं का, तो टीचर है. कळलं का? तो फिर अभी आंसर क्या होगा? दिस इज 1. 4P2 इज 4 into 3, क्योंकि 2 फैक्टर्स को लिखना है, आणि 4P4 इज 4 फैक्टोरियल, सो 12 into 24. ये तुम कैलकुलेशन नंतर करो. समझा? इज दैट क्लियर बाळांनो? येस. मतलब करो प्रॉब्लेम. डिड एनीबडी गेट दिस आंसर करेक्ट? Very good. That's what is the pleasure I get in your class. There are at least few students, nonetheless, that they are getting the answers correct and they are doing the homework basically. Very good. अगर टीचर्स के बाजू में गर्ल्स अलाउड नहीं है तो उन प्लेसेस पे हम बॉयज भी रख सकते हैं. एक principle, your answer will be correct, but as a principle remember, those who have conditions will be fixed first. Boys पे condition है क्या? नखरे कोणाचे आहेत? गर्ल्सचे. So first consider girls. टीचरचे नखरे, गर्ल्सचे पण नाही. पण गर्ल्स प्रॉब्लेम करतात म्हणून टीचर म्हणतो ना, नको बाबा हे भानगडीतच नको. कॉर्नर प्लेसेस, फर्स्ट अँड लास्ट. आयदर साइड म्हणजे बिसाइड्स द टीचर. कॉर्नर म्हणजे फर्स्ट अँड लास्ट.
काय केलं तिने मग तुला धक्का मारला गरबा खेळायला गेलो होतो सर ती फिरली आणि गरबा वगैरे खेळण्यात यावर्षी वेळ घालवायला तुमच्याकडे वेळ नाही. कारण आज गरबा खेळला तर भविष्याच्या गरबामध्ये काहीच जन्माला येणार नाही. सर तुम्ही लेक्चर कॅन्सल केला म्हणून केलं लेक्चर अभ्यास करायला होता ना. लेक्चर असो समजा की पण भारी वाक्य बोललो ना. भविष्याच्या गर्भात काहीच जन्माला येणार नाही. ती तुझीवाली कोण होती रे कुठे गेली ती कोण होती त्या दिवशी कोण होती का त्या दिवशी मी याच्याबरोबर आपण थोडी मिळवली किती कोण आदित्य नको म्हणते मला कोणीच मागे गेली काय मी उशिरा आले मी जागा पकडून ऑलराइट हो गया क्या बाळांनो ठीक है. मैं अभी ये 10th क्वेश्चन के लिए मेरे तरफ देखो खरच बोलू नका प्लीज. 12 persons get into the railway compartment having 2 benches each having 6 chairs. अभी होता है क्या there is a railway has a compartment right. So this is the railway right. On the railway there is a train. There is a train. हाँ ते इंजिन आहे आणि मागे डबा आहे. अभी ह्या दूर आहे असा इकडे इकडे अभी एक मिनिट प्लीज. In that railway compartment there is one bench here. Generally these benches are facing each other like this. There are 6 chairs over here. There are 6 chairs over here. Now 1 2 3 like this. Tell me how many persons get into the compartment. How many people get into the compartment? 12. Now 12 people are there and 12 seats are there. And therefore without any condition the number is going to be 12p12 which is equal to 12 factorial. Generally है ना 9 factorial के आगे stop it. 9 factorial के आगे वो कैलकुलेशन करना एक्सपेक्ट नहीं करते. चॉइस में भी 9 फैक्टोरियल ही लिखा होगा या 12 फैक्टोरियल. सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी सिंपल स्ट्रेट इनोसेंट क्वेश्चन. कंडीशन जो सेकंड पार्ट में डाला है उसके लिए मेरे तरफ देखो. हाउ मेनी वेज आर पॉसिबल इफ 2 पर्टिकुलर पीपल वांट टू ट्रैवल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड 3 पीपल वांट टू ट्रैवल इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. ये 2 people travel in the forward direction, 3 in the backward direction. इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये ट्रेन इधर जाती है, ये ट्रेन इधर जाती है और ये 3 persons इधर इधर ऐसे जाते हैं. असं नहीं ते 3 people want to travel in the backward direction. इसका मतलब ये नहीं ट्रेन उधर गई तो ये इधर जाते, असं नहीं है. पर वो क्या मतलब है इसका मतलब ऐसा है कि those people who will be sitting on this bench, they will be traveling in their forward direction because engine इधर है. And then these people traveling, they will be traveling in their backward direction. क्योंकि इंजन इधर ही है ना, ऐसा एक ही बाजू है. अभी चुप रहे. अभी look at me. How many people are available in all? 12.
Now, out of those two want to travel in the forward direction. What it means is that these two people must be there on this bench. Three people should be there on this bench. But इस bench पे वो है. But इस bench पे in all there are 6 seats ना. And therefore वो यहाँ कहीं भी बैठ सकते हैं. And therefore these two people will be having in all 6 chairs. Then these 3 people also would have the 6 chairs. Now 2 plus 3, 5 people are over. Remain 7 people, they are ready to sit anywhere, so they must have the 7 chairs left. And therefore 2 people 6 chairs 6p2, 3 people 6 chairs will be 6p3, and 7 people 7 chairs will be 7p7. बाळांनो समझने की कोशिश करो, ये backward forward समझा क्या तुमको? तर यहाँ भी 6 chairs है, तो they can sit anywhere. हाँ, अगर उन्होंने कंडीशन डाला होता कि 1 person out of them likes to be at the window seat वगैरह, तो मैं तो वो 1p1 होता. विंडो सीट एक ही होती है ना एक बेंच पे, तो इट वुड हैव बीन 1p1. पण असं काही नाही आहे. 2 people want to travel in the forward direction, 3 people want to travel in the backward direction. So this is 6p2, that is 6p3. Remain 7 people ready to sit anywhere is 7p7. समझा? करो. Good questions, easy questions. बट एग्जामिनेशन हॉल में अगर तुमने अभी फ्लुएंसी और प्रोफिशिएंसी नहीं डेवलप की तो एग्जाम हॉल में शायद यही क्वेश्चन डिफिकल्ट बन सकता है, क्योंकि वहां टाइम कंस्टेंट है. मराठीत गाणं आहे माहिती आहे, चिंदी बांधते द्रौपदी हरीच्या मोठ्या, चिंदी बांधते द्रौपदी हरीच्या मोठ्या. पण ते भाऊ बहिणी असतात. असू दे, पण तरी भाऊ बहीण म्हणून तर रक्षाबंधन सुरू झालं. म्हणून तर तू म्हणते आदित्यने मग ठीक आहे, मग आदित्यने बांधलं. हो गया. चलो अभी हम ये 11 क्वेश्चन इज अ सिमिलर क्वेश्चन. आई लेफ्ट इट टू यू टू ट्राई. कम ऑन स्टार्ट. 1 मिनट के अंदर पूरा करो. बिल्कुल बोलायचं नाही. एग्जाम हॉल में है ऐसा सिम्युलेशन करो. सिम्युलेशन करतो का तुम्हाला? सिम्युलेशन इज अबाउट इमॅजिनेशन, फिक्टिशियस सिच्युएशन. इमॅजिन युअर सेल्फ इन दैट सिच्युएशन. हो गया. 1 मिनट में बोला था, 1 मिनट होने को आया है. हो गया. फैंटास्टिक. इन ऑल हाउ मेनी पीपल आर देयर? टेल मी.
10. And therefore, without any condition, first answer is 10p10. Don't draw those crazy diagrams. You need not. This is 10 factorial. And the next one is what? Two people want to be on the left. So for them, it will be 5p3, 5p2. Three people want to be on the right side. That will be 5p3. Now 2 plus 3, 5 people are over. 5 will remain. 5p5 finish. समझा? इतना swiftly, spontaneously and reflexive reaction होना चाहिए. बाळांनो झालं का? ठीक है. अभी जरा मेरे तरफ देखो. ये ऐसे mathematical questions when we solve the module later on we will solve. They are good important questions. But then very simple. We are going to make it use a trick for this. Whenever, अभी ये सिर्फ एक चैप्टर के लिए नहीं है, ये बहुत सारे चैप्टर में ये ट्रिक शॉर्टकट ये जो है अप्लाई होता है. Whenever we have to find the value of n or r in this case, but in general a b c d x y z element etc. Whenever you have to find a value, go from answer to question. Go from where to where? Answer to question. So as a note, remember. Whenever we have to find the value of n or r, to find n or r, go from answer to question. समझा? अगर ये सही है तो यहाँ पहले क्वेश्चन में ए चॉइस में r का वैल्यू 2 दिया है. सो आई कंसिडर 7p2. पण 7p2 में 2 फैक्टर्स होते हैं ना, मतलब 7 into 6, बट दैट इज नॉट 2520 ना. हमें 2520 डिजायर्ड आंसर है. बी चॉइस 7p5. इसमें कितने फैक्टर्स आते हैं? 7 6 5 4 3. ये प्रोडक्ट कितना होता है? आता है 2520 आता है. तो बी चॉइस इज करेक्ट. समझा? अगर बी चॉइस करेक्ट मिला तो वापस सी चॉइस भी ट्राई करेंगे क्या? यस, प्रोवाइडेड दे हैव रिटन बी और सी, बी एंड सी. अगर ऐसा कुछ है तो सी चॉइस भी ट्राई करना पड़ेगा, पर वैसा ऑप्शन इधर नहीं है तो डोंट ट्राई. करो फिर आता सेकंड क्वेश्चन करो. np3 इज 120. अभी मेरे तरफ देखो. 2p3 basically is invalid, it doesn't exist. क्योंकि when I say npr, n must be greater than or equal to r. ये बेसिक नोट है, तो ये गया काम से. फिर 3p3. 3p3 is 3 factorial, that is not 120. Then C choice is 4p3, that is equal to 4 into 3 into 2. Even that is not 120. So none of these is correct. And the last question, we have already written this note. NPR has how many factors? R factors. समझा करो. अभी जरा मेरे तरफ देखो. Nobody will talk a single word. अभी जो टेक्निक टाइप 2 के लिए हम डेवलप कर रहे हैं उसका पहले रैशनल समझने की कोशिश करो. रैशनल का स्पेलिंग क्या होता है? नहीं. हाँ, वो जो रैशनल जब नाउन केस में होता है तो NALE होता है. कळलं का? आणि जर रॅशनल आहे का इरॅशनल आहे त्याच्यात तो NAL असतो. काय तुम्ही इंग्लिश मीडियम तुम्हाला काही येत नाही. देखो मेरे तरफ. आदित्यला विचार रॅशनलचं स्पेलिंग काय? ते चांगलं आहे ना इंग्लिश, तर त्याला विचार. तो फिर अभी मेरे तरफ देखो. लुक एट मी. इमेजिन imagine 1 2 3 1
2. Tell me, how many boys are there? Imagine that these boys are A, B, C, and these girls are 1 and 2. So tell me now, how many people are there? 5. Now, if there are 5 people, tell me how many chairs must be there? 5. And if there are 5 people, Varga, if there are 5 people, then tell me, 5 people can take 5 chairs in how many ways? And my therefore claim here is, naka bolu, my claim is that the total number of arrangements, will be 5p5, which is 5 factorial, which is 120. Question combination. Now, the girls impose a condition. In any case, we have to be together. Together means side by side. The girls say that we have to be together. Now, if the girls have to be together, where should they sit? It could be 1 and 2, or 2 and 3, or 3 and 4, or 4 and 5. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. That means their positions, their chairs are moving in block. 1, 2 का एक block होगा, या फिर 2, 3 का block होगा, या फिर 3, 4 का block होगा. So their 2 chairs are moving in one block. And because their chairs are moving in one block, for some time I combine these 2 chairs, I enclose these 2 chairs to make a big chair. And I enclose these 2 girls to make a big girl. These 2 girls are combined to make a big girl. Now my question is, how many people are there now? 4. 1 big girl and the 3 small boys. Like this, how many people are there? 4. And how many chairs are there? 4. So those 4 people can take 4 chairs. Tell me in how many ways? 4p 4 ways. 4p 4 is what? 24. So one of the possibility is that, समझने की कोशिश करो, बाद में हम इसका मैकेनिकल टेक्निक बनाएंगे. तो फिर 4 people can take 4 chairs in 4p4 24 ways. For example, it is possible that here is a boy A, boy B, boy C, and then a big girl. It could be boy B, boy A, boy C, and then a big girl. It could be the boy B, boy C, then a big girl, and then a boy A. It could be a boy B, then a big girl, and then A, and then C. It could be beginning with a big girl, and then suppose this is A, then C, then it can be anything like that. So like this, 4p4 equal to 24 arrangements can be made. Those all 4 people can interchange, shuffle their places. Clear? But our problem is that we don't have 1 girl. 1 girl is a pleasure. 2 girls are a problem. We say that the big girl is sitting here. Actually 2 girls are sitting. तो यहाँ एक possibility क्या होगी कि it will be A, B, C, 1 and 2. It could be what? A, B, C, 2 and 1. 2 girls can interchange 2 places in 2p2 2 ways. Similarly, out here it would be what? B, A, C, 1 and 2, B, A, C, 2 and 1. Here it is possible BC 1, 2 and A, BC 2,
2, 1 and A. Now what is happening is that every arrangement out of these 24 arrangements is giving me 2 further ways. Girl 1, girl 2, girl 2, girl 1, that means we are getting 2. तो इसके लिए 2 पॉसिबिलिटीज है, इसके लिए 2 पॉसिबिलिटीज है, इसके लिए 2 पॉसिबिलिटीज है, इसके लिए 2 2 2 2 2 2 2 2. Now therefore what is the total number? The total number is going to be 2 plus 2 plus 2 plus 24 times. Why? Because these are such 24 arrangements, ना? तो 24 अरेंजमेंट से हर अरेंजमेंट से हमें 2 2 2 2 मिलने वाला है, तो 2 2 2 2 2 24 times is 2 into 24. And therefore these 24 into 2, 48 arrangements will be made in such a way that the girls are together. समझा क्या? 48 arrangements are possible in such a way that the girls will be together. 1 2 2 3 3 4 वगैरह. अभी ये इसका लॉजिक हो गया, ये उसका रैशनल बन गया. टेक्निक के लिए हम क्या करेंगे? That if the girls have to be together, what I will do is 1 2 3 4 and 5. I will enclose the chairs of those 2 girls in a one big box. We will enclose them in a one big box. Now tell me how many boxes are there? These 3 and this one. 4 boxes can take 4 positions in 4p4 ways. And inside the big box, these 2 girls can take 2 positions in 2p2 ways. 1 2 2 1, 2 girls can take 2 positions in 2p2 ways. Now this is connected by, and therefore this is into 4 factorial into 2 factorial. That's what we are getting 48. समझा क्या? क्या किया मैंने? एक टेक्निक यहाँ इमर्ज हुआ है. That if the girls are together, enclose them in a one big box. So 3 other boxes and this one big box, 4p4, and inside that big box these 2 girls 2 positions will be 2p2. अगर समझो बॉयज ने कहा है, अब इथे काय झालं माहिती का, ये 2 गर्ल्स टुगेदर है, पर बॉयज के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, एक बॉय इधर भी आ सकता है. Boys are not necessarily together. Boys are not coming. There can be a boy, then the girls, and then the 2 boys. The boys बेचारे have no conditions. But suppose therefore next day the boys say we have to be together. Now if the 3 boys have to be together, then we will enclose the 3 boys in one big box. Now these 2 and this one 3p3. And inside a big box these 3 boys will be taking 3 positions in again 3p3 ways. So 3p3 into 3p3, 6 into 6, 36 ways. The boys are together, but then girl had no condition. One girl could be here. Now boys say we have to be together. And then girls say we also have to be together. Means boys are together, girls are together. So फिर boys are together, girls are together, enclose the 3 boys in one box, enclose the girls in other box. अभी ये boys का box, ये girls का box, 2 boxes, 2 positions, 2p2. What are the 2p2? What are the 2 ways? First girls, then boys. Or first boys, then girls. ये 2 ways हो गए. Now inside a big box, these 3 boys can take 3 places in 3p3 ways. And inside this big box, 2 girls can take 2 positions in 2p2 ways. And therefore in these many ways what happens is that boys are together, girls are together as well. 3 boys are together, 2 girls are together. समझा? तो अब ये एक वन लाइन टेक्निक यहाँ डेवलप होता है, वो क्या है कि if together enclose in a big box. क्या वन लाइन टेक्निक यहाँ इमर्ज हुआ है? if together we enclose them in a big box. समझा? ये एक लाइन में ये टेक्निक यहाँ स्टेट हो सकता है. And therefore, if I ask you in how many ways the girls are together, in how many ways the girls are together, what I do is 1 2 3 4 5 girls को enclose करो, and then these 3 and this one, it will be 4p4,
and these two girls 2 places 2 P2. So in 48 ways here the girls are together. समझा? Here the girls are together. अभी मैंने तुमको पूछा कि how many arrangement the girls are not together. Girls are not together. अभी समझने की कोशिश करो कि टोटल नंबर इज 120, उसमें से 48 में गर्ल्स आर टुगेदर, तो रिमेनिंग में गर्ल्स शुड नॉट बी टुगेदर, एंड देयरफॉर व्हेन दे से नॉट टुगेदर इट वुड बी टोटल माइनस टुगेदर, एंड यू विल गेट द आंसर एज 120 माइनस 48 विल बी 72. ये समझा? Now the girls say, come what may, we are always going to be separated. Between the two girls say, between us there should be minimum one boy. Two girls cannot be together for longer time, they start fighting. And therefore the two girls say, हमारे बीच में एक boy तो होना ही चाहिए कम से कम. बरं का? म्हणजे now the girls are separated. The girls are separated. Who are separated? Then the technique के तरफ देखो अभी. Who are separated? Girls. Then forget the girls. Forget the girls. If you forget the girls, what will remain? If you forget the girls, nothing will remain, my dear, in the life. If you forget the girls, then how many boys remain? Tell them to sit first of all. They can sit anywhere. So these three boys can take three positions in 3p3 ways. समझा? अभी take the two girls and tell them to sit anywhere on the alternate places. Tell them to sit anywhere on these four alternate places. समझो, one girl sits here and one girl sits here, then these positions will not be kept. These chairs will not be kept. So you can see there is a boy in between. समझा? ये गर्ल कह सकती है मैं इधर भी नहीं बैठने वाली. I will go and sit here. No problem. They are separated by the boys. This girl can say I will come here. No problem. This girl says ती तिकडे तर मग मी इथून इकडे येते. No problem. Anyway, they are separated. And therefore, if the girls are separated, again one line technique, forget the girls, arrange the boys and place the girls on alternate four places. अभी ये तो दो गर्ल्स है, वो ऐसे चारों के चारों पोजीशंस पे नहीं आएगी, पर वो से 2 out of 4 पोजीशंस पे आएगी. And therefore 2 girls, 4 places, it will be 4p2. And therefore, tell the 3 boys to sit 3p3. Alternate 4 places पे 2 girls 4p2. And this is 3 factorial into 4 into 3. That is why this is 72. ये समझा तुमको? तो टुगेदर बोला तो एनक्लोज. क्या वन लाइन टेक्निक इमर्ज हुआ है? टुगेदर बोला तो एनक्लोज, नॉट टुगेदर बोला तो टोटल माइनस टुगेदर, आणि सेपरेटेड बोला तो फॉरगेट द गर्ल्स, अरेंज द बॉयज एंड देन प्लेस द गर्ल्स एट अल्टरनेट प्लेसेस. ये टेक्निक इमर्ज हुआ है. बाळांनो कळलं का? पण हां, बट in normal English, saying not together and saying separated, they are same only. मैं ऐसा डिफरेंट क्यों किया, अनदर वे से क्यों किया, तो समझने की कोशिश करो. Unfortunately, or fortunately you decide, but we had only 2 girls here. Imagine there are 3 girls. Suppose there are 3 girls. Now 3 girls are together means 3 girls are together. Together means together. Together means together. लेकिन when I say not together,
When I say girls are not together, इसमें दो पॉसिबिलिटीज इमर्ज होगी. एक पॉसिबिलिटी है टू टुगेदर एंड वन अपार्ट, मीन्स ऑल थ्री आर नॉट टुगेदर. And the next possibility will be all three girls are separated. समझा? तो separated मतलब all separated, ये हो गया वो case separated. And therefore being separated is just a part of saying not together. Separated is a smaller case, it's a subset of be saying not together. But वो कब होगा? 3 or more girls के लिए होगा. For 2 girls saying not together, saying separated, they are same. But हम एक टेक्निक बनाते हैं कि if not together, total minus together, and if separated, forget the girls and arrange the boys. समझा? Is that clear? तो logically speaking, saying not together is a bigger case, and separated is just a subset of that. But sir, together and not separated will be same. That is also not correct. क्योंकि together means together. एंड नॉट सेपरेटेड में अगर दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, नॉट सेपरेटेड में टू टुगेदर हो सकता है. एंड देयरफॉर आई एम टेलिंग यू दैट नॉट टुगेदर बोला तो टोटल माइनस टुगेदर. पण काय होतं माहिती का की ये इसके सब क्लासेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं. अगर 5 गर्ल्स है तो इमेजिन हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज विल बी देयर. 4 टुगेदर, 1 अपार्ट, 3 together, 2 together, apart together. But these 2 will be separate. So many cases will be there. हाँ वो है 1 मिनिट. हाँ 1 मिनिट कुठं रे, एवढा जास्त वेळ लागतो तेवढं चांगलं असतो. लुक एट मी. तो क्या टेक्निक इधर इमर्ज हुआ है? नाही ते क्वेश्चन नाही त्या वेळेला विचारायचे नाहीत. फर्स्ट वी आर अंडरस्टँडिंग द लॉजिक की नाही. फर्स्ट गेट सेट विथ दॅट. या ऐसे सब क्वेश्चन विल दे आंसर ऑल क्वेश्चंस इन वन पार्ट, इन वन एमसीक्यू? नो, एमसीक्यू में एक ही पार्ट होता है, तो 1 मिनट में क्या आधा मिनट में होता है. एंड देयरफॉर यहाँ टाइप 2 का पहले टाइटल पढ़ो. टाइप 2 का टाइटल देखो. टू फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस if the objects are together, not together, separated, not separated. अभी यहाँ 1 लाइन टेक्निक लिखो. टेक्निक लिखो कि if you want them be together, together means enclosed in big box, means enclosed in big box, and separated means all separated. Means what will you do? Forget. Separated में क्या करेंगे? Forget and arrange others. Forget and arrange others. बाळांनो हो मॅडम. Arrange the others. ये क्या है, कुठेतरी काहीतरी ऐसा एक क्ल्यू के लिए लिखा है. हाँ तो फिर अभी ये पहले क्वेश्चन के वास्ते मेरे तरफ देखो. In how many ways can 4 boys and 3 girls be arranged in a row? तो मेरे को बोलो how many people are there in all? 7. Must 7 people can take 7 chairs in how many ways? 7p7 which is 5040. आता झालं किती अर्ध्या मिनिटात? हे नाही सगळंच होणार. जमत असेल तर होणार. आता गर्ल्स आर टुगेदर. तू बघ आता काउंट कर सेकंड ते लाव स्टॉपवॉच. Girls are together 1 2 3 4 5 6 7. 3 girls together enclosed. These 4 and this 1 5p5 and 3 girls 3 places 3p3. Therefore 120 into 6 that's 720. किती? 15 सेकंड. कळलं का? But then you have to develop that fluency and confidence. Basically ना it's a matter of your mindset. स्ट्रेस में होगा तो नहीं होगा, कॉन्फिडेंटली करेंगे तो होगा.
girls are not together means total minus together. Total minus together. And that will be 5020 minus 720. That 5040 minus 720 ये कितना होता है 4320 किधर आता girls are separated. Forget the girls. Tell the boys to sit. 1, 2, 3, 4. These 4 boys can take 4 positions in 4p4 ways. And then alternate places पे girls को बैठने को बोलो. 3 girls and 5 places will be 5p3. तो 4 factorial. 5 into 4 into 3. Therefore, this is 24 into 120 and into 60. So 1440. That. Ata girls are not separated. How will you do? Total minus separated. But total में है 5040 ना हे हो म्हणा आणि मायनस सेपरेटेड है 1440 की झालं 3600. देखो क्या होता है कि अगर अपने को लिमिटेड टाइम में वो क्वेश्चंस पूरे करने हैं तो 2 थिंग्स आर रिक्वायर्ड. वन इज टेक्निकल सॉलिडैरिटी. आपको टेक्निकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा. एंड सेकंडली सायकोलॉजिकली यू हैव टू बी टफ माइंडेड. समझा क्या म्हणजे स्ट्रेस नाहीच. आपण गेलोच नाही तिथे सगळा पेपर 100 क्वेश्चन्स करायला. आपण एकच क्वेश्चन करायला गेलोय फक्त. तो जेवढा सोडवतोय तेवढा. इस माइंड से करेंगे तो फिर स्ट्रेस नहीं आएगा. बाळांनो हो म्हणा. हो गया. कसं वाजतं दाखवू का. कसं वाजतं मी असं वाजत नाही. मला काहीतरी दाखवणार घेऊनच ये. तू जे ठेवलाय ना तिथे ऑफिसमध्ये मी गेलोच नाही. खाली काय गाडीत असेल नाही. ते चावी गाडी चांगलं आहे. तिला पण खाली गेले.
मग मला नाही पाठवणार तो. Look at this. It's a good picture actually. I'll show it to you. What it suggests is that you cannot dream for getting 100 out of 100 from the beginning. बरं का त्याचं interpretation बघा. If you look at 100, it will be a very big distance to travel. You will take a tension, you will get a stress. If you say, well, I will get 80, again that step is little too high. And therefore, instead of doing that, what you have to do is just think of one question, छोटी steps. एक question. टेंशन नहीं आएगा और फिर देखते ही देखते कहाँ पहुँचे 100 तक कब पहुँचे वो समझेगा भी नहीं. समझा क्या? So always aspire for having step by step, one question by one question. Never dream of getting 100 out of it. हे 10वी-12वी पर्यंत काय होतं माहिती का की आपल्याला असं ना ते सायकोलॉजी अशी होते की मला फुल ऑन फुल पाहिजे. ते हे फुल ऑन फुलला हे प्रोफेशनल एक्झाम आहे ना, असं नाही होणार. त्या मेडिकलला MBBSला लोकांना 50% मिळाले तरी आनंद होतो, कळलं का? असं नाही होत ना, बिकॉज द लेवल ऑफ एक्झामिनेशन इज डिफरंट. हां, मिळणार तुम्हाला. इवन इन लास्ट एग्जामिनेशन ऑल्सो मैथमेटिक्स में 90 के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, 100 आउट ऑफ मुझे 90 के ऊपर. बट ते 90 के ऊपर मिलना ये नहीं हो सकता है ड्रीम. एक क्वेश्चन को करो और फिर देखते ही देखते स्कोर होगा. असं वरून खाली यायचं नाही, लुझिंग एंडला जायचं नाही. 100 डिझायर केले, 99 मिळाले, यू आर ऑन द लुझर साईड. 99चे 98 झाले, 98चे 97 झाले, टेन्शन विल माउंट. व्हॉट यू हॅव टू से इज एक क्वेश्चन झाला, वा सुटलो, चला एक तर मार्क मिळाला, सेकंड मार्क, थर्ड मार्क. इथे सायकोलॉजी यू हॅव टू रिटेन. समझा क्या? तो ते जाऊन देता. हाँ, बाकी का रिमेनिंग क्वेश्चन होमवर्क म्हणून करेंगे क्या? ठीक है, ओके, स्टॉप.